Okay, so till now we have done the traditional classification of accounts, wherein we were dividing the accounts in three categories: personal accounts, real accounts, and nominal accounts. Now we come to the modern classification of accounts, herein we basically use the accounting equation to identify the accounts, and then we apply the rules of debit and credit. Okay, so let us start. First account which we will be seeing is the assets account. For the asset account, again, debit is the left hand side, credit is the right hand side. So for assets, the rule is that any increase in assets is debited and any decrease in assets is credited. Okay, so if you are adding assets to your business, then purchase of furniture, purchase of machinery, that will be debited. While if you are, say, paying cash for any purchase, then that cash as an asset is decreasing in the business and that will be credited. Okay. Apart from this, on the right hand side of the equation, we had capital and we had liabilities. So rule for capital and liabilities is just the vice versa. So debit, credit, debit and credit. Okay. So capital, when it increases in the business, it is credited. Again, liabilities, when they increase, are credited. Capital, when falls, is debited, and liabilities, when they decrease, is again debited. So capital is added by infusion of funds through the owners. Okay, so say Ram started business, he brings in cash, furniture, all this is part of capital. So that will be credited. On the other hand, if Ram is making some drawings, that is withdrawing money for personal use, then that leads to a decrease, a reduction in the capital, and hence it will be debited. Again, for liabilities, you have your business has bought some raw materials on credit. That is increasing the creditors, the liabilities in the business. It will be credited. Creditors are credited when they are increasing. But if I'm making payment for those raw materials, say on a further date, then my creditors are falling, my liabilities are decreasing. So whenever liabilities decrease, they are debited. Okay, apart from this, two other accounts which we talk about are expense account and income or revenue account. Assets and expenses have the same rule. Increase is debited and your decrease is credited. Okay. While revenue moves in tandem with capital and liabilities, any decrease in revenue is debited and any increase in revenue, say you are making some sales in the business, then that will be credited. You are receiving some, your business is receiving some interest on an investment made, that will be credited. But if the business is making some advertising expenses, your expenses are increasing, that will be debited.
So this is how the modern classification works. You are classifying first, you are identifying the accounts involved in the transaction, then you classify them in either of the five categories, and then you apply the rule. To memorize this, asset and expenses have the same rule: debit the increase, credit the decrease. While capital, liabilities, right hand side of the equation, plus revenue have the same rule: credit the increase, debit the fall, debit the decrease. ओके, सो टोटली अप टू यू. ये आपको कन्वीनियंट लगता है ज्यादा मेथड तो आप ये फॉलो कर लो. इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद ट्रेडिशनल मेथड यू कैन फॉलो दैट, बट use one method and be very clear with it. Okay, so what I'll do is, now we move to the question. Again, we'll start with identification of accounts there with each of the entries, and then we move to passing of journal entries. Okay, let's start with the first entry. I'll take up 2-3 entries, then I'll give the question to you people, and then we'll discuss it one by one. Okay, so you have to pass the entries in the ledger accounts of Anand for the month of January 2012. Started business with 5 lakh cash. Okay, so what I identify here is that there are two accounts involved. One is cash, and when the owner brings in some money to start the business, then the second account becomes capital account. Okay, now जब आप ट्रेडिशनल कर रहे थे, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए क्लैरिटी के लिए, कैश को हम रियल अकाउंट में कर रहे थे, while capital was being taken as a personal account. ठीक है, यहाँ पर ये ईज रहेगी आपको कि आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कैश इज एन एसेट while capital is basically the capital account. Okay, now what rule is followed? Rule is, if assets increase, they are debited. Okay, while for capital, if the capital increases, then it is credited. So you can see you directly have a journal entry in hand, cash account debit. तो जब आप जर्नल में ये एंट्री करोगे 1 जनवरी 2012 को, so headings, you know, first column is date column, particulars, this is ledger folio, debit and credit. I'm not writing the headings. When you make a proper format to pass these entries, you are writing all the headings. So cash account debit to capital account. This will be the journal entry. The amount is 5 lakh rupees. So you write 5 lakh like this. This debit, this was credit. Okay, and then you also write the narration for the entry which I told you. You just need to start with the prefix being started business with cash. There's no need to write the amount again. Just copy the transaction as it is, being started, being business started with cash. Now I'm seeing some strange entries coming here. Being business started with cash. Okay, just add here business. Okay, so this becomes your first journal entry. Under modern classification, if there's any doubt in this entry, you can unmute yourself and ask. I'll then move to the second entry.
मैम एक डाउट था मैम। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम इसमें मैम हमने तो मैम कैश इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो मैम कैश हाँ डिक्रीज नहीं हो जाएगा मैम? बेटा, ओनर अपना कैश लाया है। यस मैम। अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है। यस मैम। ठीक है, तो ओनर अपना कैश लाया तो बिजनेस में तो कैश ऐड हो रहा है। यस मैम। हाँ, so cash is increasing, your assets are increasing. You are preparing the entries from the point of view of the business. यस, तो मैम कैपिटल भी फिर मैम इंक्रीज ही होगा फिर मैम, क्यों हाँ कैश हाँ, आ गया तो? कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। पर यस, कैपिटल का रूल क्या है कि इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। यस मैम, ओके, अब हर ट्रांजैक्शन के अंदर एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, हाँ। बेसिकली यस मैम। हर ट्रांजैक्शन में बेटा डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम हो जाता है। अभी हम जो एंट्रीज कर रहे हैं उसमें सिंगल सिंगल अकाउंट है, तो एक अमाउंट डेबिट हो रही है, एक क्रेडिट हो रही है। वील मूव टू सम यस मैम। एंट्रीज जहां पर डेबिट में दो अकाउंट्स होंगे, क्रेडिट में एक होगा, और वाइस वर्सा। बट टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। यस मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? Okay, what we can do is, Ayan, in which entry did you have a doubt? I'll first take up that entry. मैम 21। Okay, 21 में है तो फिर what we can do is जॉनसन वाली इससे पहले भी एंट्री होगी, सोल्ड गुड्स वाली। फर्स्ट आई एम टेकिंग entry on 14th class. So then in that context we can continue with the 21st entry. Okay, now please pay attention to entry on 14th January. Sold goods on credit to Johnson. Now, what we know here is that some sales are happening in the business, but these sales are taking place on credit basis. So, what we are doing, we are adding debtors to the business, and the name of the debtor here is Johnson. Okay. Now, next thing to do is to classify these accounts as per modern rules. Sales is part of the revenue account, while Johnson here is a debtor. And I told you earlier that debtors are actually assets for the business. Okay, because in the future, what we expect is that debtors will make the payment and we will receive cash. So after that, sales are increasing. Any increase in revenue is credited. Okay. Assets are also increasing in the business. Any increase in assets is debited. So now the entry for transaction on 14th becomes Johnson account debit to sales account. Okay, by the amount of 20,000. Okay, now in continuation of this entry, we move to the 21st entry, which is cash received from Johnson on account 12,000. Now the amount due was 20,000, out of which Johnson has paid 12,000. 8,000 is still pending. Okay. Now two accounts involved here are cash account and Johnson account. Okay, cash account and Johnson account. Again, cash account is an asset, while Johnson is also an asset, being a debtor for the business. When assets increase, they are debited, while when they decrease, they are credited. Okay, so in short, I have marked through the arrows. So now the journal entry becomes cash account debit
to Johnson account. ओके क्योंकि अगर डेटर पेमेंट कर रहा है then debtor as an asset is decreasing in the business, so Johnson account will be credited. I'll also explain this, Ayan, from the traditional point of view. Cash account is your real account. Johnson account is a personal account. Cash is coming in the business. So debit what comes in. That is the rule of real account. Cash will be debited. Johnson is a personal account. Debit the receiver, credit the giver. Johnson here is giving money to the business. So we credit Johnson. So Okay, ma'am. So our just a second, Simran, I'll take up the question. So traditional is also giving you the same entry and modern classification is also giving the same entry. Yes, Simran, now your question. ma'am जो 8,000 रह गए उसके लिए कुछ नहीं एंट्री डालेंगे. Beta, maybe he has not paid 8,000 right now. Maybe he's paying this in the next month. Okay. When it is mentioned that in full settlement this amount has been paid, then we take it to be a discount given or something like that. For the time being, nothing is mentioned. It is not said here that 12,000 will nullify the earlier transaction. So we still expect 8,000. Might be in the next month he's paying that money. Okay, ma'am. Okay, because your journal entries are here only for a single month. Okay, Vandan, you have a question? मैम मैम हमारे मैम जो मैम एग्जाम में मैम क्वेश्चन आएगा तो हमारे नोट्स मैटर नहीं करते मैम, वो टेबल मैटर करती है मैम, जर्नल हाँ, वाली. जर्नल वाला टेबल मैटर करता है, वही चेक होता है. नोट्स यस. आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. यस मैम. Okay, Ayan, I hope this is clear now. यस मैम. मैम इसमें मैम ये जो मैम ये है कैश रिसीव फ्रॉम जॉनसन ऑन अकाउंट, तो मैम हम्म ऑन अकाउंट मतलब कैश, ऑन अकाउंट मतलब क्या हो गया मैम इसमें? ऑन अकाउंट होता है बेटा कि पहले जो प्रीवियसली अकाउंट मेंटेन हो रहा है उसके बेसिस पे कितनी पिछली ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे कितनी पेमेंट रिसीव हुई है. So Johnson account is already existing in your books. On यस that मैम. account, you have received 12,000 rupees. ओके मैम. Okay. Okay. So now I'll give you 5-7 minutes. All of you take up the other transactions. Pass a journal entry in your registers with respect to modern classification. Then I'll call out your names and you will be explaining the entries. Okay, so time is 12 to 12:10. We'll start with the discussion of the entries.
मैम एक डाउट था मैम। Yes, पूछो अंदर. Who's asking the question? Yes. मैम मैम जैसे मैम मैम यहाँ पे लिखा हुआ मैम मैम पेड रेंट बाय चेक, तो मैम ये कैश ही मैम समझे मैम इसे मैम। बैंक होगा ना बेटा. रेंट हुआ एक अकाउंट और एक बैंक अकाउंट हुआ. कैश की जगह आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट में आएगी एंट्री. यस मैम। ठीक. Excuse me, ma'am. Yes. What does the cash sales mean? What? In 12 questions, there is the cash sales 10,000. Cash sales is Cash sales, normal sales where you are receiving cash. So two okay, accounts ma'am. will be sales and cash. By selling some goods now. Yes, yes. Sales purchases are for goods. Okay, 24. And S. Khan. It is on cash basis. Mayank, 24th entry is on cash basis. Okay, ma'am. Okay. Last take 2-3 minutes more. Please solve. मैम एक डाउट था मैम। Yes, beta पूछो.
मैम जैसे हमने मैम मैम गुड्स परचेज किया अगर मैम वो मैम मैम बैंक अकाउंट से परचेज करें मैम मैम बाय चेक, हम्म। मैम उसे मैम मैम पर्सन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि हमने चेक से लिए मैम गुड्स। हाँ ठीक है। और मैम अगर उसे हम कैश में लें तो मैम वो रियल अकाउंट में हो जाएगा। हाँ फिर रियल अकाउंट में होगा। यस मैम मैम ये पूछा मैम। Ma'am, यस। in question 5, bought goods from S Khan for 15,000 on credit or on cash? If nothing is mentioned, it is on credit Yeah, because because हाँ बाद में आप उसको पे भी कर रहे हो तो इसका मतलब क्रेडिट पे ही हुआ ना। yeah, ma'am, 24 में वही तो कह रहा paid S Khan हाँ जी 10,000 on हाँ account. जी। हाँ तो बेटा फिर ये इम्प्लाइड है दैट दिस हैज बीन अ क्रेडिट परचेज। Okay, ma'am. Okay, so class, we'll start with the entries and let's discuss them one by one. Tanishk, Tanishk, unmute yourself. यस मैम। Yes, बेटा सेकंड एंट्री का बताओ क्या होगी एंट्री। मैम सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट विद कैश अकाउंट Okay, फॉर so 4 lakh। okay, so class, just understand there are two accounts involved, bank and cash. You are taking out cash from business and depositing in the bank account. So bank and cash both are assets. One is increasing, one is falling. Since bank account is increasing, we debit bank account and cash is reducing, we credit cash account. Yes, no issues, Shashank. You can then solve this on modern classification basis. You needn't submit the assignment again, but at least solve the question right now so that this classification is also clear. If you get stuck up somewhere in your question with traditional, you can apply the modern rule and pass that entry. So you should be clear with both the classifications. Ma'am, what does this mean Yes. on account? हाँ जी बेटा। मैम जैसे ये 21st पार्ट में एंड 24th पार्ट में है दैट ऐसे करते हैं पेड। हाँ, मैं ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि प्रीवियस क्या हिस्ट्री चल रही है उस अकाउंट की। ओके, तो जैसे आपका 21st में यू हैव रिसीव्ड कैश फ्रॉम जॉनसन, तो आप पहले देखोगे कि 14th वाली एंट्री में जॉनसन को हमने क्रेडिट पे गुड्स दिए हैं, तो उस अकाउंट पे ये कैश आज रिसीव हुआ है।
ओके सिमिलरली 24th वाला एस खान, उसको आपने पेमेंट करी है, उससे पहले एस खान की एंट्री 5th को है, 5th को आपने उससे गुड्स लिए क्रेडिट पे, तो ऑन दैट अकाउंट यू आर नाउ मेकिंग द पेमेंट, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन अकाउंट। मैम एंट्रीज क्या होंगी फिर इसमें? हाँ जी, फिर इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे? डेबिट और क्रेडिट कौन से बता अकाउंट रही में हूँ बेटा, होंगे? एक एक अभी आई विल टेक अप ईच ऑफ द एंट्रीज, डोंट वरी, लेट मी कम टू ओके दैट ओके मैम। एंट्री, देन वील डिस्कस इट देयर। ओके उपश, उपश, yes upash, you will give me the entry for 3rd January, what is the entry? Are you typing? Okay, rent is credit, bank is debit. What is the entry? You are paying rent by check. Upash, rent is being paid. Rent is an expense. When expenses increase, they are debited. So it will be rent account debit. Okay, and bank, you are making payment through your bank account. Bank is an asset. When making payment, your asset is decreasing. When assets decrease, the account is credited. So this will be the entry, rent account debit to bank account. Okay, yes, Suraj, you have a doubt in this? Yeah, ma'am. According to traditional, we know कि what goes out is it is debited, no? No. What if you are talking about bank account? Yeah, ma'am. हाँ, तो रियल अकाउंट में what goes out is credited. Yeah, and what comes in debited? Yeah, ma'am. Sorry. Okay, and then bank account, beta, here is the personal account. Okay, and personal account debit the receiver, credit the giver. You are making payment through your bank account. So there Yeah, you so are yes. the giver. तो उधर credit ही होगा bank account. Okay, ma'am. Clear. Okay. What I suggest is, it's rest is up to you. It's everyone's own discretion. Modern classification में confusion नहीं होती. ये आपकी real और personal में it might lead to some confusion. Modern classification में segregations बहुत clear हैं. So if you face doubt at any of the entry through traditional, switch for that entry at least to modern. Okay, then you can verify your entry also. Okay, let's move to the next entry. मैम Yes, मैम रेंट पर्सनल में आएगा मैम, किस में आएगा? ट्रेडिशनल rent में? will be your nominal account there. ओके मैम। Okay, and nominal में फिर वही expenses जो होते हैं वो debit होते हैं और incomes जो होती हैं credit होती हैं. ओके मैम। Okay, Simran, I'll come to that entry, but it will here be a capital account drawings. Okay, so let's move to the next entry. Yes, Vyom. Vyom is here. Yes, Vyom. Entry for 4th. Okay, next entry Ishan is telling me. So Ishan, be prepared for the next entry. Fast. By that time, I'll start with this entry. Vyom, you type in the answer in the chat box. So the entry is bought furniture for 60,000, amount paid by check. Okay. Now furniture is an asset. Asset is increasing, Vyom. So when assets increase, they are debited.
ठीक है, तो फर्नीचर क्रेडिट नहीं होगा। अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से भी चलो तो एसेट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस, so furniture will be debited. Okay, now bank account is reducing, assets when reduced are credited. मैम जो फर्नीचर है वो एक्सपेंस में नहीं आएगा? नहीं बेटा, पेमेंट चेक से हुई है ना, it is mentioned there that the payment has been made by check. मैम लाइक इससे भी तो मेरा आंसर सही आया था, लाइक बैंक अकाउंट तो एसेट होता है एंड उसके अंदर से अमाउंट गया है थ्रू चेक, हाँ तो हाँ फिर वो क्रेडिट हो गया। हाँ जी एंड उसके बाद से अगर कोई परचेज किया है हमने, जैसे लाइक हाँ फर्नीचर का परचेज किया है, तो वो हाँ एक्सपेंसेस में आएगा, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट होगा। बेटा, एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्चे जो आपके डे टू डे होते हैं। फर्नीचर व्हेन यू आर एडिंग टू द बिजनेस, you are actually adding an asset to the business ओके because ओके it ओके। will be used for long term, for more than 1 year. तो आप एक मैम एसेट ऐड कर रहे हो, ठीक है। मैम फिर इसमें अकाउंट कौन सा बनेगा, परचेज अकाउंट? नहीं नहीं, फर्नीचर परचेजेस सेल सिर्फ गुड्स के लिए होता है। गुड्स क्या होते हैं? वो आइटम्स जिसमें बिजनेस, एक्चुअल कोर बिजनेस है वो, ठीक है। अगर मैं ओके ओके मैम। फैंस मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो फैंस मेरे लिए गुड्स हुए, मेरे बिजनेस के लिए, तो उनकी परचेज और सेल्स में फिर वो होगा। ओके, जब आप फिनिश्ड फैन सेल कर रहे हो तो वो सेल्स हुई। जब फैन के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो वो परचेजेस हुई। ऐसे करके होता है। दैट इज व्हाट इज द कोर बिजनेस एक्टिविटी। मैम दैट मीन्स जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर गुड्स है, तो फिर वो हाँ, एक्सपेंस में आएगा। नो, परचेजेस में आएगा बेटा। गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। जब गुड्स परचेजेस खरीदते में हैं तो आएगा एंड जो, परचेजेस। और वो हाँ, एक्सपेंस में जाएगा। क्या चीज बेटा एक्सपेंस में जाएगी? अकाउंट तो परचेजेस अकाउंट बनेगा एंड उसके बाद हाँ से लाइक एसेट होता है वैसे वो एक्सपेंस हाँ होगा। हाँ, वैसे वो इधर एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल। ओके ओके ओके। ओके ओके, सो फोर्थ एंट्री इज क्लियर आई बिलीव टू एवरीवन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आई सेड ईशान. ईशान is here. Yes, ma'am. Yes, Ishan, you will give me the entry for fifth. Ma'am, purchases debit to S Khan, I think. Okay. Yes, absolutely right. So here you are purchasing goods. You have bought goods. As I told you, there is no account by the name of goods. When goods purchased, it will be purchases account. When sold, sales account. If purchases are returned, purchase return account. If goods sold are returned, then sales return account. So purchases is an expense. Expenses when increase are debited. No cash payment has been made. So you have a creditor. Creditor is a liability. Liabilities when increase are credited. Okay. And again, yes, Suraj, otherwise purchases will be a nominal account as per the traditional classification. Okay, just give me a second. We'll move to the next entry. By that time, yes, Simran, you write, just take up the next entry. And after that, the taken by Mukul. Okay. So first, Simran, you take up the next entry. Just give me a second. Okay, yes, Simran, take up the entry for sixth. Vandan, you had a question.
नो मैम मैम मैं नेक्स्ट एंट्री मैं बता दूं सॉरी, मैम व्हाट मैं डिड यू? नेक्स्ट एंट्री मैं बताऊं मैम हाँ बताओ, चलो, सिमरन इज एनीवेज नॉट आंसरिंग। मैम सिक्स्थ वाली मैम हाँ जी। मैम बैंक अकाउंट पर्सनल है तो मैम वो क्रेडिट हो जाएगा बॉट गुड्स फ्रॉम वी कुमार, ओके, सो और बैंक, हाँ मैम क्रेडिट पर्सनल। और मैम मैम परचेजेस में मैम नॉमिनल अकाउंट है तो मैम डेबिट हो जाएगा ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ठीक, यस मैम टू बैंक अकाउंट। सिमरन, वेयर वर यू? You were not audible to me. You take the entry for 12th now, okay? I'll call out your name again. So, class, for the rest of you, purchases and bank account is are the two accounts involved in entry on 6th. So purchases account is debited, it is an expense. Nominal account दोनों तरीके से डेबिट होगा, and you are making the payment by check. So bank account is decreasing, asset is decreasing, so it will be credited. Okay, after that, after 6th, I asked, who was the next person I asked to answer? Neha? Yes, ma'am. Yes, Neha, entry for 8th. Purchases account debit to credit account. To credit account, which account is credited? Cash account, sorry. Okay, purchases account debit to cash account. Okay, I hope this is clear to everyone since we have done so many entries on purchases. Next, Simran for 12th. There's some problem with your network. Yes. Cash accounts debited to sales account. Okay, thank you. Cash account debit to sales accounts. When you are making a sales, cash is coming in the business. So your asset is increasing, debited. Sales revenue, when revenue increases, it is credited. Okay. Next, Aryan. Yes, Aryan is there. Ma'am, next entry. Yes, Yes, beta. ma'am. 14th Ma'am's Johnson account debit. ये कर चुके बेटा, 17th की बता दो आप। अच्छा मैम, stationery to cash. ओके, Ma'am, cash. Ma'am, cash goes out credit and stationery. Ma'am, इज एन एक्सपेंस। ma'am, cash बाहर जा रहा है. हाँ, Yes, ma'am. Ma'am, और cash बाहर जा रहा है. मैम बिल्कुल। स्टेशनरी तो Cash परचेजेस में goes आएगा out ना? credit. बेटा स्टेशनरी परचेजेस में नहीं आएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस होता है। अच्छा मैंने दोबारा, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, परचेजेस सेल्स आर फॉर गुड्स, all the other day to day expenditures will come under the expense account. जो day to day खर्चे हो रहे हैं बिजनेस में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, Ma'am, स्टेशनरी का बिल है। हाँ रेन, and just to for all the science student, स्टेशनरी परचेज में इसलिए नहीं होगा बिकॉज अगर हम लोग स्टेशनरी बेच रहे हैं, अगर हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है तब वो स्टेशनरी होगा परचेज में। पर हम लोग अगर बिजनेस यूज के लिए स्टेशनरी यूज कर रहे हैं तो दैट तब वो स्टेशनरी अकाउंट बनता है। अगर स्टेशनरी बेचेंगे तब वो परचेज में जाएगा। सेल्स अकाउंट हो जाएगा बेटा तब। ओके, तो यस, एज आर्यन हैज जस्टिफाइड, स्टेशनरी का काम हमारा कोर बिजनेस नहीं है, तो आप नॉर्मल बिजनेस रन करने के लिए भी स्टेशनरी का परचेज करते हो, तो वो फिर आपका एक्सपेंस बन जाता है। परचेजेस और सेल्स आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। ओके, so just I'll share one slide with you, one info on the goods account. Okay, तो वो आज आप सब रीड कर लेना so that वो सेल्स परचेजेस गुड्स वाला कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, and then please complete this question today. We'll start with the remaining parts. I'll take up the remaining parts first